Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about yet another topic, but this one is going to be a little bit different. So because we are going to talk about a statistics topic, so we will be talking about pictorial methods in descriptive statistics. So pictorially आप data को क्या क्या use करके represent कर सकते हो. So the major topic that we will be discussing would be stem and leaf diagram, dot plots, and the most popular one, which is histogram. So histogram discrete वेरिएबल के केस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कॉन्टिन्यूस के केस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, व्हेन डू यू मेक अ हिस्टोग्राम जिसके विड्थ इक्वल होते हैं, एंड व्हेन डू यू मेक अ हिस्टोग्राम जिसके अनइक्वल विड्थ होते हैं. So all of that we will be discussing today, and apart from that I will be showing you in Google Sheets or Excel, whatever you feel comfortable. So usme we will also see how to plot the histogram, because manually it becomes a little difficult to manage that. So yeah, so topic for today would be pictorial methods in descriptive statistics. Yeah, there's one more thing for all the people who will be giving their statistics exam for BA Honors Economics course. So in your course, it has been very, very specifically mentioned that, the questions, they will not be asking any questions related to stem and leaf diagram. I mean, they can't ask you to, draw a stem and leaf diagram. And apart from that, you will be asked analytical questions. So ऐसा नहीं होगा कि you will be given a lots of data and you will be asked कि please make a histogram of that. इस तरीके के problems नहीं होंगे, but analytical question, चीज़ों को analyze करना, they might give you a histogram and then you have to analyze things. So for that analysis also you need to understand how you draw all these kinds of diagrams. So from that perspective, it's important to understand all of that, but don't worry that we will have to draw, using so much data we'll have to draw histogram. So that will not be the case. Okay, at least that's what is given in the guideline for the syllabus that has been shared for statistical methods for economics semester 1. Okay, all right, so now let's start talking about the topic. So let me share my screen. We will be talking about pictorial methods. क्या-क्या तरीके हैं pictorially you can represent. So, all right, so we will be talking about pictorially what are the different methods that you could use in describing your data. So first one, for the sake of completion, let's discuss what is stem and leaf diagram. So guys, stem and leaf diagram, as the name is suggesting, so whenever you try and make a tree, there is a stem and there are lots of leaves coming out of a particular stem. So there are lots of leaves coming out of a particular stem. So इसी तरीके का diagram है. So there is a stem, there will be a stem, and there will be lots of leaves coming out of that stem. So just to understand this in detail, let's take up an example. So example, let's say आपको किस तरीके का data represent करना है. Let's say you have a data like 26, 37, 48, let's say 33, 49, 26, 19, let's say 26 again, and then let's say 48. Okay, so let's say I have a data like this. अगर मुझे स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है? आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज माय स्टेम एंड आई हैव टू फिगर आउट लाइक व्हाट आर माय लीव्स. सो स्टेम वुड बी समथिंग जो एक लाइक होल्डिंग फैक्टर है. जैसे स्टेम है, स्टेम पे बहुत सारे लीफ होंगे, तो हमारा स्टेम क्या होने वाला है? ठीक है. सो व्हाट इज द यूजुअल प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड? सो यू हैव अ स्टेम, you have a leaf. So first I will show you an example. I will not tell you the exact procedure. So the moment I start writing it like that, you will understand what am I doing. Okay. So अब सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ? So the stem that I will be writing, that will be 2. Okay. So the stem that I'll be writing is 2.
26 here, and then 26 here, and then 26 here. So there are 326. So this becomes my stem 2, and then my leaves become 6 and 6 and 6. Okay, so that's the first part. And the second one becomes, so let's say I see here all the numbers which are starting from 3. What are those numbers starting from 3? 33, I can see. Okay, so actually I missed one, which was 19. So I didn't see 19. So what I'll do is I'll first write 1, and then I'll write 9 here. And then I'll just do what I did earlier, which was this. Okay. So yeah, 19 is also done. So 19 is done. Okay, so I was trying to figure out the 3 ones, the numbers which are starting with 3. Okay. So the numbers starting with 3 were 33, 37, and yeah, that's it. So my stem becomes 3, and then my leaves become, so I start in the ascending order. So क्या बन जाते मेरे leaves? 3 and 7. Okay, that's one. And then at last I try and see what are the numbers which are starting with 4. So 48, and then 49. Okay, so 4 becomes my stem, and मेरे leaf क्या बन जाते हैं? 8 and 8, and then 9. So basically this is my stem and leaf diagram for this particular data. So basically आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या करना होता है अगर स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है. सो पिक अ स्टेम. सो स्टेम किस तरीके से पिक करनी है, यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गिवन टू यू. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमन थ्रेड निकालो, लाइक व्हाट इज द थिंग विच इज कॉमन. सो बेसिकली हमने क्या किया, लिया जो टेंस प्लेस का डिजिट है दैट बिकम्स माई स्टेम, एंड ऑल दी अदर नंबर्स जो भी पीछे हैं वंस के प्लेस पे, दे बिकम माई लीफ. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट आर द स्टेप्स. सो यू सिलेक्ट 1 और मोर लीडिंग डिजिट्स टू बी योर स्टेम, एंड देन जो बाकी वाले ट्रेलिंग डिजिट्स, सो लीडिंग डिजिट मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, ट्रेलिंग डिजिट्स मतलब जो बिल्कुल एंड में है. ठीक है, सो ट्रेलिंग डिजिट्स जो है आपके लीफ बन जाते हैं, जो लीडिंग डिजिट है आपके वो स्टेम बन जाते हैं. ठीक है, सो एक स्टेम के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे लीफ, कॉमन फैक्टर्स वो दिखने लगते हैं. सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सो देन यू लिस्ट पॉसिबल स्टेम्स. सो हमारे पॉसिबल स्टेम्स ये थे. फॉर एवरी पॉसिबल स्टेम यू स्टार्ट writing your leaf. So that's what you can do. And then in any data, so everywhere, anywhere, if you're drawing a stem and leaf diagram, it's usually advisable कि आप लिखो कि आपका stem क्या है और leaf क्या है. ठीक है, so stem was my tens place, and leaf was my units place. Okay, so it's usually a good idea to mention it so that whosoever is looking at just this diagram and not your data can decipher what this actually is. Okay, so pretty simple, just like that. But अब इसके drawbacks क्या हैं? It can't be used for a very very big data. It's a manual task. So usually usually it's not a quite a popular method to represent your data, because what if so many 6 these things happen. So ज़्यादा information आप grab नहीं कर पाते हो if you have a large enough data. But for a very very basic small amount of data, this can make sense. Okay, so that's how you do it. Okay, so apart from that, for example, if I just give you an example to try on your own, so what could that be? So suppose you have a data like this. For example, let's say I have a data like this: 4 5 2 3 3 6 9 700 834. What else? 953. What else? 366, and then 528. Let's say I have a data like this. अगर आपके पास इस तरीके का data है, okay? Then how do you make a stem and leaf diagram? So अब किस तरीके से stem and leaf diagram बनाएंगे? So हमारा procedure क्या है? कोई भी leading digit है उसको अपने stem बनाओ, और जो trailing digits हैं make them your
make them your leaves. So basically इस केस में अगर आपको stem and leaf diagram बनाना है तो आप कैसे करोगे? Stem and leaf diagram, what do? Make the stem. So what would be a reasonable thing to do? आप क्या कर सकते हो? जो आपका stem है, that can be your, you know, the 100 place digit, that can be your stem. So 3 and 9, 8, 7, 5, 3, 5, whatever this is. So starting from 3 and then 5 and then 7 and then 8 and then 9, and then you can do, you know, the leaf thing on your own. So किस तरीके से करने वाले हो आप? If you write 3 to be your stem, so what becomes your leaf? 69. So what you will do? 69, and then where is the other 3? The other 3 is here, 366. So आप ascending order में लिख दोगे. So first you'll write 66, then you'll write 69. Okay, that's how you can do it. अब हो सकता है बहुत सारा डेटा आपको किस तरीके से दिया हो, something like this. So let's say 4.2, 3.5, 7.8, इस तरीके से दिया हो. तो what is the most natural thing to make a stem? That is, you can make this your stem, right? And then anything which is after the decimal can become your leaf. Okay, so just mention what is your stem, what is your leaf, so that whosoever is just looking at this diagram, they can decipher it. Okay, so that's how you do stem and leaf diagram. And now let's start talking about dot plots. So let's see that. Okay, okay, so the next topic would be dot plots. So again, ये भी एक पिक्टोरियल मेथड ही है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगेन similar things, it's not I mean it will not be very useful if we have a very large data, but for, you know, reasonable amount of data, which is very small considering the amount of data that we have these days, but ठीक है, we should know what this method is. Okay, so this is also, so dot plot के बारे में अगर हम लोग बात करें, dot plot, it's also a way to represent the numerical data. किस form में? Okay, so let's understand this also with the help of an example. So what would this be? Suppose you know, let's say आपके पास किस तरीके का data है? You have the data on age of different students who are, you know, involved, let's say in a dance class or some other activity class. Okay, सो वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उस क्लास में, सो उनकी एज जो है आपने रिकॉर्ड की और वो डेटा आपके पास अवेलेबल है, उस डेटा को आपको डॉट प्लॉट का यूज करके रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो लेट्स से द डेटा इज ऑन एज ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, so involved in a particular activity class. So the data is, let's say, 11, 5, 9, 13, 8, 9, 9. Parents usually, you know, enroll students, enroll their kids in such activity classes in the beginning, so that they get to see what kind of, you know, interests that they have. So let's say 11, 13, 12, 7, 6, 11, 12, 10, let's say 8. Okay, so let's say we have a data like this. Okay, so इस तरीके का data है. Another measure would be dot plot. So dot plot कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करना है? So dot plot is nothing but एक horizontal scale है, उस पे you know you make that scale based on what is the range of your data. आपके डेटा की रेंज क्या है? So range मतलब कि आपके डेटा की मिनिमम पॉइंट क्या है, आपके डेटा की मैक्सिमम पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे आप एक रेंज बना लेते हो हॉरिजॉन्टल स्केल पे. सो वंस यू डू दैट, उसके बाद आपको क्या करना है? यू जस्ट मेक डॉट्स वेर एवर यू सी योर डेटा. that's it, that's what you do. So each observation will be represented by a dot, and then you just put that dot on a horizontal scale, one over the other. अब कैसे करना है? Let's see. So let's say अब horizontal scale, अब यहाँ पे range की अगर मैं बात करूँ तो what is the smallest number, smallest you know kid in this particular class? So we have student or kids for 6 years of age, and then 5 years of age also. Do we have someone below 5? No.
So 5 is the minimum. And then what is the maximum age of any student who is enrolled in this class? I can see 13, but 12, 10, 11, 11. I can't see anything which is greater than 13. So yeah, okay. So it's going to be between 5 and 13. So let's say हम लोग जो है इस तरीके से एक horizontal scale, बना लेते हैं. So let's say it starts from 4 so that you can see, okay? And then this is 5, this is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and then 14, okay? So इस तरीके का हमने एक horizontal scale पे ये numbers put up कर दिए. अब आपको क्या करना है? Just, अब हम we will start from here to here, and then whenever you see any occurrence here, just put up a dot on the horizontal scale. ठीक है? So let's say you start from here. So 11 हमने सबसे पहले देखा. So 11, so you just put a dot here at 11. ठीक है? Okay. उसके बाद 5 देखा, just put a dot here, 5. फिर 9, and then just put a dot here. And then I saw 13, so put a dot here. And then I saw 8, put a dot here. And then 9 2 times. So 9 2 times. So 1 9 was here, second 9, third 9. So आप अपने डॉट्स को स्टैक करते जा रहे हो वर्टिकली स्टैक करते जा रहे हो एक के ऊपर एक. ठीक है? So we did that, and then 11 दूसरा नंबर स्टैक हो गया इसके ऊपर. फिर then 10 फर्स्ट 10 आ गया, and then 8 सेकेंड नंबर स्टैक हो गया. Then 6 we had it here, and then 7 and then 12 11 फिर 11 एक और स्टैक हो गया, 3 नंबर्स हो गए, राइट? And then 13 12 7 6 11 12 10 and then 8 and then 8. So इस तरीके से आप जो है डॉट प्लॉट बना लेते हो. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तरीका. हॉरिजॉन्टल स्केल है that you make based on what your data is, and then जो भी ऑब्जर्वेशन है हर ऑब्जर्वेशन के corresponding you just put a dot on the the horizontal scale, stacked one over the other, जितने बार वो ऑब्जर्वेशन आपको रिपीट करनी होती है. ठीक है? So although I've made them very very spaced, मैंने बहुत space दिया है, but usually आप इतना space नहीं देते हो. So just for representation purposes I have given this much space, but usually उतना space नहीं होता है. They are very very मतलब बहुत ही इस तरीके से represented होते हैं कि okay, इस तरीके से usually represented होते हैं. Okay? So yeah, but again drawback इसका यही है कि बहुत ही small amount of data के लिए इसको use किया जा सकता है. So yeah, okay, so that was our second method for representation. Again location का measure दे देगा, ये range बता देगा. एक तरीके से आपको ये भी पता चल जाता है कि what was the number which was seen in the data maximum amount of time. So here I can see that जो 11 साल के बच्चे थे maximum they were in the majority. Basically 4 students had 11 years of age, and that was the mode of the data. Okay, so yeah, that is what it was. Okay, so finally the relevant topic at hand is histogram. Okay, अब हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी एक तरीका है आपके डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने का. अब डेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किसी भी तरीके का हो सकता है. सो बेसिकली 2 तरीके से आपके पास डेटा हो सकता है. यू कैन हैव डिस्क्रीट डेटा ऑल्सो. You can also have continuous data, right? So डिस्क्रीट डेटा मतलब ऐसा डेटा जो फाइनाइट है, जो लिमिटेड है, या फिर अगर वो फाइनाइट नहीं है तो उसको एक काउंटेबल तरीके से लिखा जा सकता है. सो लाइक 1 2 3 4 5 6 7, इफ यू जस्ट कीप गोइंग ऑन, इट्स नॉट फाइनाइट, बट इसको एक एक पर्टिकुलर फैशन में लिखा जा सकता है. सो समथिंग लाइक दैट. या तो वो हो या तो एक फाइनाइट हो, मतलब आई कैन टेल कि अच्छा मेरे डेटा में 10 15 उसी तरीके के ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है? उस तरीके के सिचुएशन से अगर आपने डेटा ग्रैब किया है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा. ठीक है? डेटा आप एक्चुअली में कुछ पॉइंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस ही होंगे, और
कुछ ऑब्जर्वेशंस ही होंगे बेसिकली। जैसे मान लो लेट्स से इफ यू हैड योर एग्जाम, ठीक है, तो एग्जाम में कितने कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम में यूजुअली लेट्स से एग्जाम इज फॉर 100 मार्क्स, so 1 to 100 कोई भी नंबर आ सकते हैं, एंड प्रोवाइडेड लेट्स से द टीचर डजंट गिव 0.5, 0.25, 0.15, इस तरीके से मार्किंग नहीं होती है, सो ओनली 100 नंबर्स आर पॉसिबल. So that is an example of you getting data from a discrete source. Okay. Second example could be, let's say I get the height of students. Okay. So height in itself is a very continuous variable, right? It's a continuous data, because height जो है 5.1 भी हो सकती है, 5.1.1 भी हो सकती है, 1.111 इस तरीके से भी height हो सकती है, ठीक है. Although because of lack of us being able to measure that, हमारी inability of measuring that की वजह से हम लोग उसको discrete में consider करते हैं, but actually height is a continuous variable. Okay. So दो तरीके से डेटा मिल सकता है. So depending on the situation हम लोग अलग अलग तरीके से हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं. ओके. सो ऑल राइट. सो सबसे पहले अगर आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, सबसे पहले let me show you an example of a histogram जहाँ पे क्लास इंटरवल्स और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हम लोग जब सिंपली डेटा को देखते हैं, और बहुत ही नेचुरल ऑर्डर है अगर डेटा में, जैसे कि मान लो 1 to 10, मान लो आपका 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, कितने बच्चों के 1 मार्क्स आए हैं, कितनों के 2, कितनों के 3, कितनों के 4, इस तरीके से अगर डेटा है तो उस डेटा को बहुत ही इजी तरीके से हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करा जा सकता है. सो आई विल जस्ट शो यू, आई विल शेयर अ फाइल on Google Sheets and show you in such an example. Okay. So yeah. Okay. So all right. So I hope you are able to see my screen. So this is an example. So अब ये so this particular data has been taken up from your book, but your book has taken this example from actual research study. So this was a study of author productivity, and a large number of authors were classified. बहुत सारे authors के लिए data collect किया गया था according to the number of article that they've published during a certain period. So एक पर्टिकुलर पीरियड कंसिडर किया गया. उस पीरियड में उन्होंने, वो जो भी ऑथर्स थे, उन्होंने कितने आर्टिकल्स को पब्लिश किया, उसका डेटा जो है हमने लिया है, एंड द रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड इन दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है कि डिफरेंट ऑथर्स जो थे उन्होंने कितने कितने आर्टिकल्स जो है पब्लिश किए. तो एक आर्टिकल पब्लिश कितने ऑथर्स ने किया, सिर्फ एक आर्टिकल. सो ऐसे कितने ऑथर्स थे, 789. ठीक है. 2 आर्टिकल्स कितनों ने पब्लिश किए, 204. 3 आर्टिकल्स कितनों ने पब्लिश किए, 127. इस तरीके से अलग अलग आर्टिकल्स कितने लोगों ने पोस्ट किए, कितने ऑथर्स ने पब्लिश किए, दैट हैज बीन गिवन हियर. ठीक है. सो व्हाट इज द यूजुअल प्रोसीजर दैट यू हैव टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम. सबसे पहले बहुत ही नेचुरल ऑर्डरिंग है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वट एवर. ठीक है. सो वन वे ऑफ ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम कुड बी, आप क्या करो, आपका जो एक्स एक्सिस है उस पर ये नंबर्स यू कैन सिंपली हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन टिल 17. ठीक है. अब देखो आपके पास नंबर ऑफ ऑथर्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर नंबर. सो 1 आर्टिकल 784 ऑथर्स. ठीक है. आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स निकाल लिए. सो आई हैव जस्ट एडेड ऑल दीज नंबर्स. सो इफ यू जस्ट सी द फॉर्मूला हियर, it's going to be this. Okay. So okay, all right. So याद, अब आपके पास 2 तरीके हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के. इस केस में, इस तरीके के केसेस में 2 तरीके हैं. या तो आप अपना जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग नंबर ऑफ ऑथर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि मेरा डेटा जो है, जो डेटा पॉइंट 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो कितनी बार मेरे डेटा में देखा गया था. ठीक है. अगर ये तो बहुत ही स्ट्रक्चर टेबल वे में डेटा है, अगर ये एक्चुअल बहुत ही रॉ डेटा होता तो कैसा होना चाहिए था कि 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ऐसा जो भी फ्रीक्वेंसी दी थी उतने टाइम्स हमारे पास डेटा अवेलेबल था. तो ये बहुत ही टैबुलर फॉर्म में अच्छे तरीके से डेटा दिया हुआ है. तो ओके, सो वन वे कुड बी, यू कैन यूज दिस फ्रीक्वेंसी.
आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुट किया, सो 784 एंड देन corresponding to what was the number here. So इस तरीके से आप यहाँ पे on the x axis you can have number of articles and then on the y axis you can have the frequency. इस तरीके से भी आप एक histogram को draw कर सकते हो in such cases. So that is one way. Second way क्या होता है, आप एक दूसरा अप्रोच भी ले सकते हो which is putting up the relative frequency. Relative frequency मतलब कि ये जो मेरे ऑथर्स हैं ये मेरे टोटल ऑथर्स के कितने प्रोपोर्शन है, ठीक है. सो टोटल ऑथर्स है 1309 और ये ऑथर्स उसका कितना परसेंटेज या प्रोपोर्शन है, दे आर क्लोज टू 0.599 समथिंग लाइक दैट. इतना प्रोपोर्शन है, ठीक है, इतना फ्रैक्शन है, ठीक है. दैट मीन्स क्लोज टू 60% ऑफ द ऑथर्स जिन पे स्टडी की गई दे ओनली पब्लिश्ड वन सिंगल आर्टिकल, ठीक है. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए व्हाट डिड वी डू, so we did B8 which is number of authors and then we divided it by 1309 which was this particular number, total number of authors. तो आप इस तरीके से relative frequency निकालो, ठीक है, and then you can simply plot this relative frequency also here, ठीक है. So both methods work fine. So this is one way of making the histogram, ठीक है. But this is only applicable जब आपको डायरेक्टली ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं आपके डेटा में आप यूज कर सकते हो. बट कई बार डेटा बहुत सारा हो जाता है, बहुत ही इतना नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होता है, या फिर ज्यादा डेटा हो गया, तो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट पुटिंग अप इंटरवल्स, ठीक है. इसको भी हम इंटरवल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई एंड सी दैट. ओके, सो ऑलराइट, सो आई विल so this was the example wherein we just used whatever these numbers are. बहुत ही natural and regular ordering थी, इसलिए हमने इसको use किया. But what if ऐसा होता कि 1 2 and then 7 8 and then 14 15 17 इस तरीके से अगर डेटा अवेलेबल है, तो आप सिर्फ ये नंबर्स को प्लॉट नहीं करते, यू जस्ट यूजुअली इन जनरल टेक इंटरवल्स टू डू दैट. तो लेट मी जस्ट शो यू अनदर एग्जाम्पल. सो ओके, so we have another example. So जहाँ पे let's say we had a test और वो जो टेस्ट था उसका स्कोर हमें दिया हुआ है, ठीक है. So let's say this is the data that we have. So ये जो कोई एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का स्कोर जो है उस पे हमें डेटा अवेलेबल है, ठीक है. अब डेटा जो है, स्कोर तो कितना भी हो सकता है, राइट. सो गोइंग, लेट्स से लुकिंग एट द एग्जाम्पल, इट कैन गो फ्रॉम 1 to 100. तो it's usually a very hectic task to just draw 1 2 3 4 5 till 100, right. So the most natural choice is आप ब्रैकेट्स बना दो, आप इंटरवल्स बना दो डेटा के, और फिर देखो कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल जो आपने बनाया है उसमें कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है. So we can see that the minimum number that we had was 55 here. Okay, so 55 was my minimum number, and what my maximum number was 95, I guess. Yeah, so 95 was my maximum number, right. So हम क्या कर सकते हैं, हमारे अलग अलग ब्रैकेट्स बना सकते हैं, ठीक है. So let's say one natural bracket making interval could be कि आप क्या करो, 55 से लेके 65 तक का डेटा देखो, दैट कुड बी योर वन इंटरवल. 65 से लेके 75 तक का डेटा देखो, एंड देन 75 से लेके कहाँ तक का डेटा देखो, 85 तक का. ओके, एंड देन you can see you can check your data from 85 to 95. Okay, so one thing that you have to be very careful about is, okay, one thing that you have to be very careful about is, देखो अब यहाँ पे I can see that this 65 is in this interval also and the 65 is in this interval also. So usual convention क्या है, what is the convention? Convention is जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर आएगा, अब 65 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नंबर है, राइट, सेकंड नंबर है, एंड यहाँ पे 65 इज द फर्स्ट नंबर. सो जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे 65 है वो 65 इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर इंटरवल में. सो 65 जो है वो कहाँ पे काउंट होना चाहिए, इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल एंड नॉट दिस. सो लाइक दिस इज द यूजुअल कन्वेंशन दैट वी फॉलो. सो whenever you feel
दैट अ नंबर इज कमिंग ऑन बॉर्डर, कोई नंबर बॉर्डर पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यू विल कंसिडर इट ऑन द इंटरवल जहां पे it is on the left side, so this particular interval. So okay, so for example यहाँ पे जो intervals considered हैं वो क्या है 55 to 65. so यहाँ पे लिखा हुआ है the count for 55 to 65 is 6, मतलब 55 to 65 का जो interval है उसमें 6 numbers हमारे पास हैं, ऐसे 6 scores हैं जो इस interval में lie करते हैं. so first is this, yes, so first is this 55 and then 62 is also there. So just for this one I'll highlight this, 62 is there and then 62 again, so 62 again and then again 62 is becoming quite popular, 62, and what else, so 55 again, yeah, 55 again. So how many such नंबर्स आर देयर. फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब इस इंटरवल में कितनी बार डेटा आपका देखा गया, विच वाज 1 2 3 4 5 एंड देन 6, या 62 अगेन वाज द लकी नंबर, सबके 62 ही मार्क्स आ रहे थे. ओके, सो 6 नंबर्स हियर एंड देन सिमिलरली, सो 6 नंबर्स हियर, राइट. सिमिलरली यू कैन सी कि 65 to 75 में कितना डेटा है, 4. सो 65 to 75 1 2 3 and then yeah, and 4 and 5, yeah, no, so 75, you see 75 is not a part of this interval because 75 will be a part of the next interval क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे है ये नंबर. सो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 70 70 70 70 4 times, so this will be counted 4 times. okay, 75 to 85, how many times 75 is included in that, so only one. okay, and then 85 to 95 and then 95 to okay, I don't know why is that. okay, yeah, so we also had a number 95. अब ये 95 वाला नंबर जो है वो किसी और इंटरवल में इंक्लूड होना चाहिए, राइट. so it should be from 95 to 105. okay, so all right, so this interval will have 1 and this will have 2, this will have 4, 75 to 85 is 1 and then this will have 4. okay, so total data kitna ho gaya, we have how many observations, we have 14, and are these also 14, so yeah, these are also 14. ठीक है, so इस तरीके से हम लोग डेटा को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड करके उनकी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. अब आप चाहे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करो या फिर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी प्लॉट कर सकते हो. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, दिस इज 6, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स दैट वी हैव, 14. तो 14 जो है 14 में से I can just shift it a little bit, yeah. So relative frequency निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I will just have to this is 6, so it is this, and then divide by what is the total number of members here, 14. ठीक है, so मैं इस तरीके से divide कर दूंगी. so yeah, so this becomes my relative frequency and ये जो मेरी relative frequency है उसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देती हूँ. या सो लेट्स से 3 digits तक हम लोग अगर रखें तो ये वाले जो है दिस बिकम्स माय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस बिकम्स माय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो और आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी प्लॉट कर सकते हो. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू द make the histogram. But one more thing that I want to point out is it's not necessary, जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 का इंटरवल बनाना है. हो सकता है you want to make 5-5 interval, हो सकता है you want to make 25-25 interval, whatever feels right you can do. okay, but usually क्या रहता है 5 से लेके 20 के बीच में there is no hard and fast rule. 5 से लेके 20 के बीच में if you put some intervals that's fine. एंड यूजुअल रूल ऑफ थंब कई बार क्या हो जाता है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको कितने इंटरवल्स बनाने चाहिए अपने डेटा के लिए. अगर कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो द जनरल रूल ऑफ थंब इज व्हाटएवर इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मान लो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं 100, ठीक है,
100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको कितने इंटरवल्स बनाने चाहिए? आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक अ रूट ऑफ योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो 100 ऑब्जर्वेशंस अगर हैं, वी टेक अ रूट ऑफ दैट, व्हाट इज दैट, 10. तो यू कैन लाइक क्लोज टू 10 इंटरवल्स अगर आपके बन रहे हैं तो यू आर फाइन. ओके, सो इस तरीके से जो है इस चीज को थोड़ा सा समझा जा सकता है, बट देर इज नो वेरी theoretical basis of doing that. No, just that's just a rule of thumb. Okay, all right. So yeah, I let me show you one more thing also. अब इसमें जो है you will see कि किस तरीके से आपका डेटा चेंज होगा based on how I decide to uh, how I decide to change the क्लास इंटरवल का साइज अगर हम चेंज करते रहे तो किस तरीके से हमारा डेटा जो है चेंज होगा. ओके, सो लेट मी जस्ट चेंज द सेटिंग अ लिटिल बिट हियर. सो मैं क्या कर सकती हूँ, इफ आई गो टू हिस्टोग्राम हियर, हियर द बकेट साइज जो भी आपका इंटरवल साइज है दैट वाज ऑटोमेटिक. बट अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आई वांट टू से कि मुझे 5-5 का इंटरवल चाहिए, सो आई विल डू दिस. सो जब आपने 5-5 का इंटरवल किया तो फिर यहाँ पे आपका डेटा किस तरीके से हो गया, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, इस तरीके से डेटा आपको दिखने लगा. ठीक है, इफ वी डिड वी 10 तो वी ऑलरेडी डिड, राइट. सो 10 का तो हमने देख लिया. ठीक है, सो जैसे जैसे आप अपना ब्रैकेट चेंज करोगे, अब यहाँ पे 25 का ब्रैकेट रखा तो ओनली लाइक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स. सो इस तरीके से अगर मैं अपना ये क्लास साइज बढ़ा दूँ, सो 2 रख दिया, तो मेरा डेटा इस तरीके से दिखने लगा. ठीक है, आई कैन पुट एक्चुअली एनीथिंग. लेट्स से इफ आई पुट 8, no particular reason, it starts to look something like this. So the shape will start to change the moment you change your class intervals. ठीक है, so I'll just keep it on auto here for now. Okay, so that's what we can do. Okay, so very very interesting. You can play around with it on Google Sheets to try how your histogram looks like. Okay, all right, so that was one example to show you कि किस तरीके से आप histogram को समझ सकते हो. So all right, so coming back to our original screen. All right, so I hope you enjoyed that. So basically, what is the general procedure to make the histogram? अगर आपको class intervals में बनाना हो, class intervals का use करना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप frequency determine करते हो, frequency of the data, and relative frequency also you can determine. relative frequency का मतलब आपका डेटा का प्रोपोर्शन क्या है आउट ऑफ द टोटल डेटा, कि वो कितनी बार देखा गया है, relative frequency. एंड देन आप क्या करते हो, जो भी आपका एक्स एक्सिस है वहां पे अलग अलग बाउंड्रीज को मार्क करते हो, जो भी आपकी क्लास इंटरवल्स हैं उसको आप मार्क करते हो. ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू. उसके बाद क्या करते हो, और हर एक क्लास इंटरवल, सो ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ऐसे जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था, अलग अलग क्लास इंटरवल्स हैं, उसके ऊपर यू मेक अ रेक्टेंगल. ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट जो होती है, अब आप फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हो, अगर इक्वल लेंथ के हैं फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हो, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हो. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हो इफ यू आर मेकिंग अ हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास विड्थ्स. इक्वल क्लास विड्थ्स, इक्वल क्लास विड्थ का मतलब क्या हो गया, कि ये जो इंटरवल्स हैं इनका जो इनका जो साइज है दैट इज द सेम. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. ओके, ऑल राइट. अब इसके अलावा देयर माइट बी केसेस जहां पे आपके पास डेटा ऐसा हो जहां पे इट डजंट मेक सेंस टू हैव इक्वल क्लास वेट्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एग्जाम्पल मान लो
स्कोर्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चों ने एक टेस्ट दिया जिसमें क्या हो गया कि द क्वेश्चन द पेपर वाज फॉर 100 मार्क्स, द पॉसिबल नंबर्स वर 1 to 100। ठीक है, अब जो नंबर्स आए बच्चों के वो कुछ इस तरीके के आ गए, मान लो 20, 20, 22, 25, 26, 23, 24, 11, 12, 15, 17। मतलब मेजॉरिटी जो नंबर्स हैं वो क्लोज टू 20 ही सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट, एंड बीच में पूरा गैप है। ठीक है, एंड देन सडनली मे बी लाइक कि कुछ लोगों के 80 मार्क्स हैं, कुछ लोगों के 85 है, कुछ लोगों के 95 है, और एक बच्चे के 100 भी है। सो आउटलायर्स, राइट? ऐसे बच्चे जिनको सब बॉयकॉट कर देते हैं, यूजुअली यही होता है, बट एनीवेज ओके। सो 80, 85, 95 एंड 100। ठीक है, सो मान लो इस तरीके का डेटा है। सो बेसिकली लाइक दीज आर नॉट दीज आर नॉट दी ओनली नंबर्स, बट आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी डेटा जो है वो सारा अगर मैं 1 से लेके 100 के बीच में देखूं तो मेजॉरिटी डेटा इस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। ओनली थोड़ा बहुत डेटा जो है यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके के डेटा में अगर आप क्लास इंटरवल्स इक्वल बनाओगे तो क्या होगा, ये सारा बीच का जो पोर्शन है वो खाली रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में इट मेक्स सेंस टू हैव अ हिस्टोग्राम जहां पे आपके जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल ना होके वो अनइक्वल हो। ठीक है, सो यू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम with unequal class widths। तो आप अनइक्वल क्लास विड्स वाला हिस्टोग्राम कब ड्रॉ करते हो, जब योर डेटा इज नॉट वेरी मतलब आउटलायर्स हैं आपके डेटा में, और कहीं पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कहीं पे बहुत स्पार्सली लाइक स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, कि कहीं पे बहुत थोड़ा सा डेटा है, कहीं पे बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, बहुत सारा डेटा पॉइंट्स उधर ही है। ठीक है, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ हिस्टोग्राम लाइक दैट। ओके, सो अब इसका प्रोसीजर क्या रहता है? इसका प्रोसीजर भी सिमिलर ही रहता है। क्या रहता है देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी देखो, यू नो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है कि भाई आपको इंटरवल पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो इस तरीके का डेटा अवेलेबल है, ये मार्क्स वाला एग्जाम्पल हमने लिया। अब उसमें मेरे इंटरवल्स जो है कैसे कैसे हो सकते हैं कि भाई यहाँ से मान लो कि 25 या 30 तक बहुत सारा डेटा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने इंटरवल्स ऐसे रख सकती हूँ, 0 to 5, 5 to 10, and then 10 to 15, and then 15 to 20, and then 20 to 25, and then 25 to 30। ठीक है, अब इसके बाद मुझे पता है कि मेरा डेटा ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 20 आ गए, यहाँ पे भी 20 आ गए। इतने कितने बच्चे हो गए, मान लो 100 बच्चों की क्लास है। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो 10 आ गए, सो टोटल कितना हो गया, ओके whatever this is, doesn't matter anyways। so और मान लो यहाँ पे कितने बच्चे आ गए, यहाँ पे आ गए 8 बच्चे, 8। ठीक है, इसके बाद मुझे पता है कि ये बीच का जो गैप है यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन मेक अ वेरी बिग इंटरवल। ठीक है, अब ये सारे क्लास विड्स जो हैं इनका साइज क्या है, 5 5 5 5 5 5। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आई कैन मेक अ बिग इंटरवल, लेट्स से आई कैन से 30 to 90, कि 30 to 90 के बीच में कितने आ गए, एंड देन मे बी आई कैन से कि भाई 90 to 100 के बीच में कितने आ गए। या फिर ये करने के बजाय मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 30 to 80 कितना आ गया, और फिर 80 to 100 कितना आ गया। ठीक है, फिर इस तरीके से इस इंटरवल में कितना है और इस इंटरवल में कितना है। ठीक है, अब ये अनइक्वल क्लास इंटरवल्स वाला हिस्टोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज इक्वल बनाने का पॉइंट भी क्या है, हर जगह ये पूरा डेटा जो है 0 0 0 0 वाला हो जाएगा, सो दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल्स बनाओ, वो इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी देखो, जहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे इक्वल विड्स रखो, जहाँ पे बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे बड़े बड़े इंटरवल्स, बिग इंटरवल्स यू कैन मेक, एंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देयर। उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है,
विच इज एडेड बिकॉज यू हैव अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सिर्फ उसको केटर करने के लिए वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, विच इज, अब देखो भाई, अब पहले जब हमारे पास इक्वल क्लास विड्थ्स थे तो हम या तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे थे या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि जो भी रेक्टेंगल, अब आपके मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे 5 5 5 5 5, फिर ये बड़ी सी इंटरवल आ गई, ठीक है। अब रेक्टेंगल जो प्लॉट करना है उसकी तो हाइट चाहिए ना, पहले क्या कर लेते थे, या तो फ्रीक्वेंसी या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना पड़ेगा, बिकॉज क्लास विड्थ्स आर नॉट इक्वल, अब जो रेक्टेंगल की हाइट होगी वो कैसे निकाली जाएगी, रेक्टेंगल्स हाइट विल बी व्हाट, इट विल बी कि भाई जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है of whatever class, relative frequency, and then you divide it by class width, कि जो भी आपकी क्लास है उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। कि मान लो ये क्लास विड्थ 50 हो गया, मतलब क्लास का साइज कितना हो गया, सो क्लास विड्थ हो गई 50 और इसमें जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो ये इस तरीके से आप अपनी रेक्टेंगल की हाइट को डिटरमाइन करोगे फॉर एवरी सिंगल इंटरवल, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं पहले, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा, विच इज यू फाइंड व्हाट इज द रेक्टेंगल्स का हाइट। सो इसको हम लोग डेंसिटी प्लॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इसको डेंसिटी स्केल, डेंसिटी, सो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल हाइट है इसको हम डेंसिटीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो या that is what happens when you know make the histogram for unequal class widths, ठीक है। अब जब अगर इक्वल क्लास विड्थ्स होते तब अगर ये चीज कर सकते थे, बट सब जगह क्लास विड्थ सेम ही है, ठीक है। सो रेक्टेंगल बस स्केल हो जाता, लाइक नंबर जो है बस स्केल हो जाता, बाकी कोई वेरिएशन नहीं आता डायग्राम्स में, ठीक है। Okay, so I will just quickly show you one example that we have in the book of such a data, ठीक है, so that you can understand in what circumstances you can use such a data. So let's see. So let's say you have a data like this. Okay, so this is the data that is given. अगर आपके पास इस तरीके का डेटा है, ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग तरीके से, सो लेट्स से दिस इज द डेटा दैट इज अवेलेबल, एंड इसको भी अगर बहुत ही अच्छे से स्टडी किया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 to 4 जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो 9, 4 to 6 15, 6 to 8 5, 8 to 12 9, एंड देन उसके बाद आप देखो कि हर जगह 2 2 2, एंड देन यहाँ पे धीरे धीरे इन्होंने दे कैन सी कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, तो क्लास विड्थ 4, क्लास विड्थ 8 एंड क्लास विड्थ 10, तो वो उसको चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। कि ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो इन्होंने अलग अलग अपने क्लास विड्थ बना लिए, ठीक है। just note that why this sign is there, that means 4 is not a part of this. 4 को जहां पे भी इनको इंक्लूड करना पड़ेगा वो इधर इंक्लूड करेंगे, 6 को जहां पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा वो इधर करेंगे, 8 को इधर, 12 को इधर, 20 को इधर, ठीक है, इस तरीके से उसको इंक्लूड करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, दिस नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, डेंसिटी निकालो। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, दिस नंबर डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, दिस नंबर डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ विच इज 2, दिस नंबर डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, दिस नंबर डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, इस तरीके से निकालेंगे, और फिर जो है आप अपना हिस्टोग्राम जो है प्लॉट कर दोगे, ठीक है। So the histogram for this particular diagram is going to look something like this. So let me just show you that also. So okay, it's going to look something like this. Okay, so किस तरीके से होगा, जो भी आपका क्लास विड्थ है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, and then it started increasing, 8 to 14, increased again, ठीक है। So और आपने अपना जो डेंसिटी है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर उस तरीके से आपका रेक्टेंगल का जो है हाइट बन गया, ठीक है। सो कभी भी इस तरीके का हिस्टोग्राम दिया है जहाँ पे अनइक्वल क्लास विड्थ है, तो
ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर आप निकालते हो तो वो आपको क्या दे देगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, दिस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ, राइट। सो डेंसिटी, this rectangle height was density multiplied by class width. So if you multiply these two numbers, what are you going to get, relative frequency. So कभी भी अगर relative frequency निकालने की जरूरत पड़े तो क्या करो, बस rectangle height देखो इंटू क्लास विड्थ निकाल दो, वो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा इन केस ऑफ unequal class intervals. Okay, all right, so guys, I hope it is making sense to you, and you are able to get some clarity on it. So yeah, so that's it for today's topics on dot plots and stem and leaf diagram and histogram. So let me know in the comments if you did not understand anything from this particular topic. So I will see you super soon with another video on any other topic related to the course. So yeah, so thank you so much. I hope you enjoyed today's lecture. If you did, please like the video and subscribe to my channel and share it with someone who might get help from this particular video. So I'll see you super soon. Thank you so much, and till we meet again, take care. Thank you so much.